welcome to VLSI for All. Today we have with us young and dynamic technical engineer Ashutosh Kumar with us. He did his BTech in Electronics and Communication from JC Bosch University of Science and Technology in VLSI for All, and now he is placed in ST Microelectronics as the digital design engineer. I'm very happy that he got placed in such a good MNC, and he also secured GATE All Indian rank of 879 in third year, which is a great achievement. So Ashutosh, I'd like to congratulate you on behalf of my team on getting placed. So how are you feeling today? Thank you for the welcome. I'm feeling very nice. Yeah. So can you please introduce yourself to the audience? As I mentioned, my name is Ashutosh Kumar, and I got internship at JC. I got internship at ST Microelectronics, and I'm currently in final year of BTech at JC Bosch University of Science and Technology, YMCA Faridabad. I'm also a tuition teacher, teaching from past 4 years. Yeah, that's really nice. So we would also like to hear how was your college life in BTech and why did you choose job over higher studies? Uh, the life at the college was fun actually. I got very good friends who helped me during my preparation for GATE exams and also helped in interview in VLSI. Also got some of the very good seniors who were very helping, who taught me many lectures regarding VLSI also. So, and talking about the curriculum of BTech, I think it is not very tough. Anyone can do easily and have enough time so they can prepare for the other subjects. And one thing that is very important for the college is societies. And the societies actually help a person in overall development of a child or overall development of a person. So I was also the part of one of the society where I took many sessions regarding electronics. So it was fun doing that. Yeah, it was really nice hearing about your college life and your experience about your college. So I would also like to ask, how was your interview experience at ST Microelectronics and how did VLSI for All help you with it? Uh, Actually, I didn't give the answer of the second part of the question of the previous question. Uh, actually, about that MS or MTech part. So I didn't choose the MS MTech part now because I want the experience in my field first. Then I'll be doing MS MTech if it is required. Yeah. And talking about the real interview experience in ST Microelectronics, the offer I got was on campus at JC Boss. So there were basically three rounds in the interview. The first was CV shortlisting, where they shortlisted a CV on the basis of percentage criteria. I think 75% is the minimum criteria, that is 10, 12, and bachelor's. Then they came on campus after my sixth semester of examination, where they conducted the first round, that was written round, pen paper round. It was comprised of 10 MCQs, then two questions which were carry 5 marks, and then aptitude part, which was 2 marks, 5 questions. Yeah. The paper level was easy to medium level and not very difficult. Yeah. Then there were two rounds of interviews, and there were two rounds of interviews where they asked the questions on digital electronics, Verilog, static time analysis, RC circuits, CMOS, and some of the projects was also there on the projects. That's all. Yeah, so let's deep dive into interview questions. So how many questions were asked in the technical round and what were they? Uh, First round, pen paper round or interview round? Technical round. In the technical interview, All the three technical round. rounds were technical. Yeah. Uh, so there were two interviews. The first interviews they much more focused on a static time analysis, where they asked three, four questions related to static time analysis, where they gave one of the circuit of uh, static time analysis, and they told me to write the timing constraint. And one was the question on CMOS. One of the question was there on the digital, where they gave me the circuit and asked me to uh, write the name of the circuit. It was basically a DLS which was made using multiplexer.
there was one of the question on RC circuit, which was basically a high pass filter, and he told me to give the VI diagram for that question. And there were many questions related to CMOS, and there was general question also, why you wear that ring, and there was very many general questions. Yeah. And the second interview was basically the first question they asked me was on the Verilog. They told he gave me one of the circuit diagram and told me to write the Verilog code for that. And there was general question also about the technology that is going on, who is the leader in the semiconductor. Apart from that, there were question on static time analysis again. What is meta stability? How can we remove the meta stability? What is the use of gray codes? What is the use of FIFO? How can we? What are the signals involved in the FIFO? As but one of my project was on FIFO. So these questions they were asked. Yeah, so as you know, skills are really important in any profession we talk about nowadays. So, what are the basic skills required to land in a job profile as yours? So the skills, I think the very important portion in VLSI is digital electronics, and digital electronics should be very good. I think GATE lecture over here can help you in this problem. मतलब कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप गेट के क्वेश्चंस वंस आप अच्छी तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू to clear any VLSI interview. So one is your digital electronics. Second, I think Verilog, which is very important. Designing through Verilog, you can make many projects. The projects like UART I made, REST processor I made. So Verilog is also one of the important portion of VLSI interview. The third, I think, is static time analysis, where you basically deal with the timing constraint. There are some concepts of static time analysis. I think one should do static time analysis, uh, and then come network analysis. And network analysis is very important as it is the basics of analog. So network theory, then electronic devices, scripting. One of the scripting languages required like Perl, Python, Shell, and of course analog, basics of analog. Apart from them, I think CMOS is also very important, uh, and computer organization. Yeah, so we would also like to know what was your motivation behind giving GATE? Uh, Frankly speaking, initially I want to get into the government job. That's why I started the preparation for the GATE examination. But once I started preparing for the GATE examination, in the second year, I think I I came to know about the VLSI industry. And जो मेरा the interest जो मेरा इंटरेस्ट था वो गेट से VLSI की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया. Then later on, I focused more on the subjects which were useful in the VLSI rather than in the gate. So I left some of the subjects like EMFT, communication. I didn't did those subjects very nicely. So initially तो मेरा गवर्नमेंट जॉब का ही मेन पर्पस था. Yeah, so in the last 3 to 4 months, how did you manage your time between revision and giving tests and interviews? Like, how were you able to do it all together at once? Uh, Actually, last 3 4 months were very hectic. Uh, I I am also from I am from Gurgaon, and my college is in Faridabad, so I have to travel 4 hours daily. Apart from them, I was a tuition teacher, and there were BTech exams. There were semester exams also at that time. So actually, I was not able to revise the subjects very thoroughly, but uh, it was Saturday Sunday was okay. मतलब Saturday Sunday में हम prepare कर सकते थे. And I use the COVID time, जो कि बहुत ज़्यादा useful रहा मेरे लिए. I manage the time COVID period, and उसी टाइम ज्यादातर प्रिपरेशन की थी. लास्ट 3 4 मंथ में इतना प्रिपरेशन नहीं हो पाया था. दैट्स वाई थोड़ा रैंक थोड़ा पीछे रह गया था.
Yeah, what is your motivation to get into VLSI domain? How did your journey towards VLSI domain started? एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था अपनी गेट प्रिपरेशन फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, बट लेटर ऑन आई केम टू नो अबाउट द वीएलएसआई. So, since it is a high paying job, apart from that, it is also very interesting doing in your own field. One of my professors said कि in the government exams, you actually get more about the management skill rather than the technical skills. तो वो चीज थोड़ी मुझे खराब लगी कि if I am studying the technical, I should work in the technical only. So that motivated me to work towards the VLSI, and many of my seniors are also working in the cadence synopsis. So that gave me uh, push towards the VLSI industry. Yeah, I'd also like to know what are your takeaways from your college? What did you learn majorly from your college life? आई लर्नड कॉलेज की तरफ से तो बेसिकली जो सब्जेक्ट्स थे वो तो कॉलेज में थोड़ा बहुत साथ साथ ही पढ़े. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे गेट के लिए कुछ पढ़ना होता था तो मैं क्या करता था कि उन सब्जेक्ट्स को पहले कर लेता था जिस जो सब्जेक्ट्स मेरे कॉलेज में चलते हैं, मतलब कि साथ साथ ही कर लेता था. तो मुझे एक एक्स्ट्रा प्रेशर मुझे फील नहीं करना पड़ता था कि जैसे कि कॉलेज में मेरा नेटवर्क थ्योरी चल रहा है तो मैं खुद से नेटवर्क थ्योरी कर रहा हूँ गेट के लिए. तो साथ साथ मेरे कॉलेज की प्रिपरेशन भी हो गई, गेट की प्रिपरेशन भी हो गई, और वीएलएसआई के लिए भी मैंने वो कर लिया. अपार्ट फ्रॉम देम, कॉलेज की जो सबसे अच्छी चीज होती है आई थिंक फ्रेंड सर्कल. यू विल गेट अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल जिनसे आप सीखते हो, उनके साथ करते हो, ठीक है. आपके बीच में कंपटीशन हो जाता है. मेरे दोस्त थी जिसके साथ मैं प्रिपेयर करता था, एंड हम क्या करते थे, कंपटीशन करते थे. लाइक उसका कंप्लीट हो गया तो मैं उस टारगेट को अचीव करना स्टार्ट करता था. तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल जो मिला कॉलेज से. अपार्ट फ्रॉम सोसाइटीज, सोसाइटीज में सेशन लेना, कंडक्ट कराना, जूनियर से इंटरेक्ट करना, सीनियर से इंटरेक्ट करना, तो आपकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है वो सही होती है. एंड आई थिंक दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द कॉलेज. Yeah, it was really nice to hear. And like you cracked gate in third year, right? So how could you balance your college studies where you scored really good CGPA and then your gate preparation? How could you manage both of it? मैंने जैसा कहा कि बेसिकली आई हैव, मैंने स्टार्ट करी थी सेकेंड ईयर से. तो जो सब्जेक्ट्स मेरे सेमेस्टर्स में आते थे वो मैं पैरेलली कर लेता था. तो मुझे इतना कभी डिफिकल्ट लगा ही नहीं किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए. उससे कॉलेज के एग्जाम तो हो ही जाते थे. कॉलेज एग्जाम क्रैक करना इतना मुश्किल होता नहीं है. मेन जो था वो बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग था, पीवाईक्यू था. मैं क्या करता था, कॉन्सेप्ट पढ़ता था, पीवाईक्यू करता था. तो पीवाईक्यू करने में हमें अपने कॉन्सेप्ट जो वीक होते हैं वो पता चलते हैं, तो हम उन कॉन्सेप्ट को दोबारा फोकस करें. तो कॉलेज प्लस गेट प्रिपरेशन साथ साथ किया. थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट इतना भी था क्योंकि कोविड पीरियड आ चुका था. तो कोविड पीरियड पे सभी घर पे थे, तो कॉलेज का इतना प्रेशर रहता नहीं था. तो यू कैन प्रिपेयर फॉर द गेट इजिली. Yeah. So are there the important topics that are required for an aspiring VLSI student to get into an VLSI domain job? Basic subjects I think which are required is, the first is digital electronics. One should be very good at digital concepts. So, and I think that the gate lectures are enough for the digital electronics. The second portion is, I think, Verilog, because you have to make your projects on Verilog. आपके रिज्यूमे में कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. तो प्रोजेक्ट्स आप वेरिलॉग से ले सकते हो. प्रोजेक्ट्स लाइक रिस्क प्रोसेसर बना लिया, या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बना लिया, या सिंपल एएलयू बना लिया. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके सीवी में होने चाहिए. तो फॉर दैट आपको वेरिलॉग करनी चाहिए. एंड फॉर वेरिलॉग एनपीटीईएल लेक्चर्स आई थिंक द बेस्ट डॉक्टर इंद्रनील्स लेक्चर्स, which is available on the YouTube also, SWAM app also. Apart from them, that static time analysis is very important. In उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आरसी सर्किट्स की, क्योंकि आरसी सर्किट से ही आप डील करोगे अपने वीएलएसआई में. कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, अगर आप सीमॉस भी देखते हो तो सीमॉस में भी जो सर्किट्स होते हैं उनकी बेसिक्स है. नेटवर्क, आप एनालॉग पे जाते हो तो वहां पे भी आपको एनालॉग आने के लिए नेटवर्क की इंपॉर्टेंस जरूरी है. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको आनी चाहिए.
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कंपल्सरी तो नहीं है, बट हाँ अगर आप कर लेते हो, लाइक पर्ल कर लेते हो, शेल कर लेते हो, पाइथन कर लेते हो, तो आपको एक बेटर पोजीशन मिलेगी अदर देन अदर सीवी। उसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कई इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, लाइक एनवीडिया एनवीडिया पूछती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंटेल पूछती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ डोमेन्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी है। तो ये सब्जेक्ट्स तो मैंडेटरी है, आप एक बार देख लो। So, what would you recommend for the aspiring MTech and BTech students who are watching this video about getting into VLSI domain? What are your advices for them? फॉर द बी बीटेक स्टूडेंट, VLSI aspirant, डोंट वेस्ट योर टाइम। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर होता है, that is for the exploration. You can explore in first year. From second year onwards, start preparing for the domain in which you want to go. Either you want to go into the coding, then start study from the second year only. If you want to go into the VLSI industry, start from the second year. Because जब आप second year से start करते हो, तो इतना pressure नहीं रहता, वो धीरे धीरे चीजें हो जाती हैं। एंड साथ साथ आपके करिकुलम में हो जाती है, प्रेशर नहीं होता, और आप एंजॉय भी कर लेते हो। ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ो ही पढ़ो, आप मजे करो, बट ये ध्यान रखें कि आप जो करना चाहते हो वो चीज लैग बिहाइंड है। एंड फॉर बी स्टूडेंट, VLSI is I think a very emerging field in India, also semiconductor के initiatives हैं। अभी कोविड के टाइम वर्ल्ड में चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी। तो आई थिंक द VLSI has a very bright future in India also, in foreign also. तो one should prepare for the VLSI, and कोडिंग में जाने से बेटर है आप अपनी फील्ड लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में VLSI में बहुत अच्छा कर सकते Yeah. Since there are many job roles and domains in VLSI itself, like how can a fresher or someone choose which domain they want to go into after preparing for an VLSI job role? How can they decide which job in VLSI domain they should choose with? हैं। फॉर द VLSI, आई थिंक द वन शुड डू द बेसिक सब्जेक्ट्स, लाइक बेसिक सब्जेक्ट्स तो हर सब में सेम ही होते हैं, लाइक सीमॉस हो गया, डिजिटल हो गया। आफ्टर दैट दे शुड डू द लाइक वेरीलॉग कर लें, RTL की रोल होती है, वेरीलॉग कर लें। जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो हर जगह रिक्वायर्ड है, वन शुड प्रिपेयर दैट। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो कंपनी में, तो बेसिकली दे डोंट डिमांड यू कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए। उन्हें ये चाहिए होता है कि आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए, वन शुड गुड एट देयर फंडामेंटल्स। तो अगर उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो कंपनी को उनको ट्रेन करने में, इंटर्नशिप में ट्रेन करने के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। तो आप बेसिक सब्जेक्ट्स करो, लाइक जो बेसिक सब्जेक्ट सब जगह रिक्वायर्ड है, जो पूछे जाते हैं, आप अपने रिज्यूमे में वो डालो। उसके अलावा जो कुछ रोल्स है, जैसे कि आप RTL की रोल पे जाना चाहते हो, तो आप उनका डिस्क्रिप्शन देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, जो कि लिंक्डइन पे आती रहती है, या कहीं पे भी जॉब पोर्टल्स पे देखो कि क्या 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 रिक्वायर्ड होती है, आप कहाँ पे जाना चाहते हो, लाइक फिजिकल डिजाइन इंजीनियरिंग इंजीनियर बनना चाहते हो, या RTL इंजीनियर बनना चाहते हो। तो बेसिकली उसको देखो आप कि उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, एंड उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको रिसोर्सेज समझ में नहीं आ रहे, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, लाइक VLSI फॉर ऑल ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको गाइड कर सके। क्योंकि हाँ, गाइडेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर नॉट गेटिंग मच इन्फॉर्मेशन ऑन द यूट्यूब। यूट्यूब पे चीजें पता नहीं, ज्यादा है नहीं। तो अगर आपके सीनियर्स है, इफ यू हैव अ गुड सीनियर, इफ यू हैव अ गुड कनेक्शन, यू कैन आस्क ऑन लिंक्डइन, पीपल पीपल आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अब वहां पे पूछो लोगों से, दे विल टेल यू कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। यू विल गेट मेनी पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू आउट, कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा, तो आप बेसिकली कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अफोर्डेबल रेट में है, जो कि आपको गाइड कर सकते Yeah. So, according to you, how should an ideal resume look like to land into an VLSI job? हैं। आई थिंक द रिज्यूमे शुड बी ऑफ वन पेज। द वेरी द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर रिज्यूमे इज योर CGPA, एंड CGPA इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली रिक्रूटर को आपकी रिज्यूमे से ज्यादा आपकी CGPA
पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि अगर इफ अ चाइल्ड इज गुड एट इट्स सीजीपीए, ही विल बी गुड एट द जॉब आल्सो। तो आपकी रिज्यूम, ऐसा बोलते हैं कि बीटेक की जो सीजीपीए होती है इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट ये गलत है। रिज्यूमे में आपकी सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके अलावा आपके वीएलएसआई के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जो कि ये बताता हो कि आप वीएलएसआई के पीपल हो या नहीं हो। जो चीज आपको नहीं आती है वो चीज गलती से भी मेंशन ना करो। भले उस जॉब रोल के लिए चाहिए बट वो आपको नहीं आती तो आप मेंशन मत करो। जो चीज आपको आती है वो चीज आप मेंशन करो। क्योंकि वंस अगर आपको बहुत चीजें आती है लेकिन आपने रिज्यूमे में ऐसी चीज लिख दी है जो आपको नहीं आती, देन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, फिर वो आपको अच्छा इमेज नहीं देता। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, आपकी अचीवमेंट्स होगी, वो आप डाल दो। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द रिज्यूम। उनको जो मेजरली जो इंपॉर्टेंट होता है, आपकी स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, आपकी सीजीपी क्या है, एंड द प्रोजेक्ट पोर्शन। Yeah, it was really helpful hearing about how a resume should look like. And so, do you want to यस। say a few words to our audience about VLSI for All and its initiative? VLSI for all is doing a really great job. बेसिकली एज आई सेड कि यूट्यूब पे चीजें अवेलेबल नहीं है, तो जो गैप है एक कॉलेज के बीच में और एक इंडस्ट्री के बीच में, तो उस गैप को फिल कर रहा है वीएलएसआई फॉर ऑल। तो आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। जिनको वीएलएसआई में जाना है, जो सच में काम करना चाहते हैं, तो उनको एक ब्रिज बना के दे रहा है जहाँ पे इजिली पीपल जा सके या बेसिकली उस पर वर्क कर सके, उन्हें पता चल सके कि करना क्या है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज में भी, इज गाइडेंस। आप बहुत अच्छे हो सकते हो किसी चीज में, पर अगर आपकी गाइडेंस अच्छी नहीं है तो अल्टीमेटली आप जो कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, वो वेस्टफुल है। तो नॉलेज इज यूजफुल जब आप उसे यूज अच्छे से करते हो, आपको अच्छी गाइडेंस है। तो आई थिंक वीएलएसआई फॉर ऑल वो जो गाइडेंस वाला पोर्शन है उसमें काफी अच्छा है। Yeah, it was really nice hearing from you. So we are at the end of the interview. Before wrapping up, could you please give some motivation tips for our viewers? आई थिंक इन्फॉर्म रहो, फोकस, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। You actually can move a mountain if you really think, or if you really want. I think that's all. Thank you. Yeah, every day holds a possibility of miracle. So keep hoping for the best and keep rocking. And thank you, Ashutosh, for sharing your experience and advices with us. It's going to be really helpful for our viewers. Thank you so much. Thank you.